आईसीसी में इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ की वजह से देश के विभिन्न भाग में युवा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से होते हुए राजस्थान के अलावा देश के कई भागों में युवा सड़क और रेल मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं। इस आपात स्थिति को देखते हुए हमने यह विशिष्ट पत्रकार वार्ता बुलाई है। मैं स्वागत करता हूं देश के पूर्व वित्त मंत्री, राज्यसभा सांसद आदरणीय पी चिदम्बरम जी का, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव श्री अजय माकन जी का, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं विधायक राजस्थान से आदरणीय सचिन पायलट जी का और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी का। आप सभी का स्वागत है। मैं आग्रह करूंगा चिदम्बरम जी से कि वो पत्रकार वार्ता आरंभ करें। Good evening to all of you. My colleagues, Mr. Ajay Maken, Mr. Sachin Pilot, and Mr. Pawan Khera have joined me today to address the media on a very, very important and what appears to be a controversial issue, the so-called Agnipath scheme. I have an opening statement which I will read, and then Ajay will make the statement in Hindi, and then we'll take a few questions. We would like to request you to confine this press conference to the subject of Agnipath. It is a matter of great concern that the government has announced a scheme called Agnipath to recruit 46,000 soldiers to the 3 defense forces. The Agnipath scheme is controversial, carries multiple risks, subverts the long-standing traditions and ethos of the armed forces, and there is no guarantee that the soldiers recruited under the scheme will be better trained and motivated to defend the country. We have read and heard the views expressed by retired defense officers. Almost unanimously, they have opposed the scheme, and we believe that many serving officers share the same reservations about the scheme. Our first concern is that the Agnipath soldier will be trained for 6 months and will serve for another 42 months when 75% of the recruits will be discharged. It appears to us that the scheme makes a mockery of training, inducts into the defense forces an ill-trained and ill-motivated soldier, and discharges a disappointed and unhappy ex-soldier into the society. The age of recruitment, 17 to 21 years, raises numerous questions. A large part of our youth will be totally excluded from serving in the defense forces. The stated objective of savings on the pension bill is a weak argument and has not been established beyond doubt. On the other hand, the short period of training, 6 months, and the unusually short period of service, 42 months, may have negative consequences on quality, efficiency, and effectiveness. We fear that the scheme may turn out to be a case of penny wise and security foolish. Several distinguished defense officers have pointed out that a fighting soldier must take pride in his unit, must be willing to lay down his life for his country and comrades, must not be risk averse, and must be capable of exhibiting leadership. They fear
that each one of these objectives will be in jeopardy under the scheme. The announcements by the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Education on post-discharge opportunities appear to be afterthoughts. They show that the scheme was poorly conceived and hastily drawn up. A major change in the mode of recruitment should have been examined thoroughly, and a pilot scheme should have been tried and tested. Nothing of that sort has been done. Several experts have suggested alternative models to address the issues of inadequate recruitment to the defense forces. There is no indication that the alternatives were examined. Given the situation on our borders, it is imperative that we have soldiers in our defense forces who are young, well-trained, motivated, happy, satisfied, and assured of their future. The Agnipath scheme does not advance any of these objectives. It is our duty to warn the country of the consequences of a hastily drawn-up scheme. We would urge the government to keep the Agnipath scheme in abeyance, hold wide consultations with serving and retired officers, and address the issues of quality, efficiency, and economy without compromising on any one of the three considerations. Ajay. साथियों, अभी चिदम्बरम साहब ने बहुत ही विस्तार से अग्निपथ के बारे में बताया। हमारे देश में ठेके पर सैनिकों की भर्ती का नया नाम है अग्निपथ, और ये हमारे देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं के साथ में एक भद्दा मजाक है। हमारे सरकारों के अंदर कुल मिलाकर के 62,29,000 रिक्त पद, 62,29,000, जिसमें भारतीय सेना अकेले के अंदर 2,55,000 रिक्त पद, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर 91,929, लगभग 1 लाख रिक्त पद, स्टेट पुलिस फोर्सेस के अंदर 5,31,000 के करीब रिक्त पद, रेलवेज के अंदर 2,66,000 रिक्त पद हैं, और सभी अगर और भी सब मिला लें तो लगभग 62,29,000 रिक्त पद। और ठेके पर सैनिकों की भर्ती कितने टोटल? केवल 46,000 लोगों को इतना बढ़ा चढ़ा करके, और वो भी युवाओं के साथ में किस प्रकार का भद्दा मजाक है ये भी आपको आगे मैं बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण, इसके अंदर केवल 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की उसके बाद में सर्विस, और 46,000 में से 3/4 उसके बाद में उनको हटा दिया जाएगा, और वो लोग उसके बाद में सेना में सर्विस करने लायक नहीं रहेंगे। और यही नहीं, सिर्फ 17 और 21 वर्ष के युवाओं को ही इसके अंदर आने का मौका मिलेगा। आज जब हम यहां पे आ रहे थे, किसी ने एक दुखद घटना बताई कि हरियाणा में एक इसी प्रकार के युवा जो कि 21 वर्ष से ज्यादा जिसकी उम्र हो गई थी, उसने अभी आत्महत्या कर ली। पूरे देश भर के अंदर युवाओं के अंदर एक ऐसा माहौल है कि जैसे वो तैयारी करते हुए आए, और हमारे देश के अंदर हमारे सरकार ने उनके साथ में एक भद्दा मजाक किया है। 2 वर्ष से सेना में भर्ती बंद है, और उसके बाद में ये अग्निपथ ठेके के ऊपर सैनिकों को लेने का भद्दा मजाक जो किया गया है, इससे ज्यादा शर्मदार चीज नहीं हो सकती। सैनिकों के लिए 4 चीजें सबसे जरूरी होती हैं, जैसे अभी चिदम्बरम साहब ने बताया। सबसे पहले हमारे सैनिक प्रशिक्षित होने चाहिए, फिर संतुष्ट और खुश होने चाहिए, तीसरा प्रेरित होने चाहिए, और चौथा सुरक्षित भविष्य उनका होना चाहिए।